श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है इस श्रीमद् We welcome all of you to class on Śrīmad-Bhāgavata Gita. आज अध्ययन कर रहे हैं Today we are studying तृतीय अध्याय का third 39वां chapter, श्लोक। verse 39 on. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। Bhagavan Shri Krishna is answering Arjuna's question, कि ऐसा क्यों होता है कि where इच्छा ना करते हुए Arjun had asked that पाप कर्म में प्रवृत्त why होते does हैं। a person engage in sin even भगवान without ने having बताया कि desired इसका for it? मूल कारण हमारी कामना है So Bhagavan और explained विषय that the main में जो reason is our desires, our चाहते हैं, attachments to sense प्राप्त objects, करना चाहते हैं, our उसके desire कारण ही to ऐसा होता है। enjoy और the senses. उससे ऐसा क्यों होता है उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये कामना जो है And ये why it हमारे happens, he विवेक को explained that this desire, आवृत it कर लेती है, ढक लेती है। covers the discernment, the jnana for the person. तो मनुष्य And when jnana is covered, when discernment is सही covered, निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। then the इसी person बात is को unable to स्पष्ट take रूप से correct भगवान decisions. बताते हैं। आवृतम So ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हे अर्जुन, यह काम translation, ज्ञानियों का नित्य O शत्रु Arjuna, है, discernment is covered by अग्नि के this समान eternal प्रज्वलित enemy होने वाला है, of the wise in the form of उसे desire, ढक लेता है। which is insatiable like fire. यहाँ पर स्पष्ट रूप से वो बताते हैं कि So कैसे here he is telling very ये जो clearly कामना है that how this व्यक्ति के ज्ञान को ढकती है। desire, it covers the ज्ञान discernment of the person. हमारे विवेक से है। Here ज्ञान jnana refers सही to सही किसी चीज को discernment. सही सही समझना।
It means to और उसकी understand anything सीख as it बुद्धि is. से आती And this है। understanding बुद्धि is किसी possible विषय को through our देखती है buddhi. When we तो see उसके लिए any हमारे sense इंद्रियों का object, संपर्क विषय के then साथ, first of all, और जब इंद्रियों का विषय के our साथ संपर्क senses होता है contact तो the उससे पहले objects, and when the contact जो happens, अनुभूति होती है उसको निर्विकल्पक the ज्ञान बोलते हैं। the experience that we get, that क्योंकि is इंद्रियां जो है nirvikalpa वो उस बात jnan, को समझने में असमर्थ हैं, because क्योंकि senses उनको are ये पता unable नहीं चलता है कि to ये वस्तु understand क्या the है। sense objects. So the senses do not जैसे आप understand what that थर्मोमीटर object को is. गर्म पानी में Like डाल दें if you तो if थर्मोमीटर you put गर्म a होगा, thermometer in hot गर्म water, होता है, the गर्मी प्राप्त होती है, mercury, it लेकिन expands. थर्मोमीटर को इसका थोड़े ज्ञान होता है कि But कितना the thermometer तापमान does है not या कितना understand ठंडा है। the temperature. तो व्यक्ति देख कर कहता है कि बहुत गर्म It है is या the ठंडा human है। being who sees and तो understands इंद्रियां तो that केवल he has उसको fever. So नापती हैं, senses simply और उस measure, नापने में उनको ये पता नहीं होता है कि ये क्या है क्या नहीं है। and while measuring, the senses तो themselves do इसीलिए not उसको बोलते understand हैं what it is or what it is निर्विकल्पक not. ज्ञान, So that जिसका jnana वो is called nirvikalpa jnana, means that और जब something उसका is there. संपर्क मन से होता है And when the contact happens in the तो मन को mind, एक अनुभूति होती है सुख और दुख की। then the mind gets an जब experience मन के of अंदर ये sukha and गुण है तो dukkha, किसके happiness संपर्क and में कुछ भी distress. आता है तो Because उससे mind has this quality कुछ that when वस्तुएं it अनुकूल contacts something, होती हैं और कुछ then either it प्रतिकूल will होती हैं। be favorable or लेकिन unfavorable. उसको भी सही ये पता नहीं चलता है कि ये वस्तु है But क्या। the mind doesn't understand जैसे properly इंद्रियों को तो ये केवल इतना पता चलता है कि कुछ है, what it is. It is और in मन से senses ये at पता least चलता है कि understand that ये something is अनुकूल there, है या प्रतिकूल है, लेकिन and है क्या। mind understands whether it is favorable or unfavorable, तो उसको but पता what it चलाने के is, लिए it बुद्धि cannot का उपयोग understand. करना है। So, in order to understand what तो it बुद्धि is, जो we है उस need the buddhi. अनुभूति को लेकर So, the जो buddhi, पुराना it हमारे takes the experience संस्कार जो हमारे अंदर and बैठे हुए हैं उसके साथ में it वो उसको फिर तुलना करती है, it मिलाती है, starts it starts और उससे matching उसको with एक the ज्ञान latent एक ज्ञान देती samskaras of that object lying in the chitta, and और then it ये understands बताती है कि what ये it मेरे is. लिए अच्छा है या बुरा है, क्योंकि Then केवल buddhi अनुकूल या conveys whether प्रतिकूल it is good or ये bad बोलना for नहीं है कि us, वो वास्तव में हमारे लिए because अच्छा है simply being या favorable बुरा or है। unfavorable is not enough. उसका निर्णय बुद्धि देती है, So buddhi takes the decision whether it और is जब good or बुद्धि bad for अनुभूति the कर person. जाए And तो if इसलिए your बुद्धि का buddhi काम has होता been है विवेक, covered, so the job विवेक से of buddhi, the role of buddhi is to मन do केवल discernment, संकल्प विकल्प to करता do है, vivek. Mind simply does और sankalpa फिर and वो vikalpa. हमें समझ आता है कि ये वस्तु क्या It है। just accepts or rejects. But then with buddhi we तो understand what it is. तो अगर हमारी बुद्धि जो है वो प्रभावित हो So जाए काम if से, our buddhi प्रभावित होना becomes मतलब influenced by kama or विकृत हो जाए, desire, यानी कि जो चीज़ being उसको अच्छी influenced लगती है उसको means ना दिखाए, जो if चीज़ it अच्छी है becomes उसको बुरा distorted, दिखाए, बुरी को if अच्छा the दिखाए, buddhi तो वो stops बुद्धि का showing काम है। objects as it is, because buddhi takes हम this कुछ चीज़ decision. देखते हैं मीठी लगती है तो जीव को तो अच्छा लगता है, लेकिन If वो we चीज़ मेरे लिए when we लाभदायक है या taste नुकसानदायक something, है ये हमें बुद्धि से पता नहीं simply by चलता। taste we do not understand whether it is किसी good को or bad for us. It is we डायबिटीज़ का रोग understand है that by तो वो buddhi. खाता है तो If उसको somebody has अच्छा लगता है, उसको भी diabetes आता है, and consumes some लेकिन अगर sweet वो बुद्धि का उपयोग food, करेगा तो then उसको he लगेगा also कि ये feels मुझे it अच्छा है। sweet. But if he uses his buddhi, he understands that लेकिन it अगर is उसकी not good for बुद्धि me. कामना से ढकी हुई है But if his buddhi is covered कि by मैं इस kama चीज़ or का सेवन desire, करना चाहता हूँ, तो फिर वो बुद्धि उसको बताएगी नहीं कि नहीं ये नुकसान है, वो कहेगा नहीं, फिर वो बुद्धि तर्क देगी कि क्यों खाना ठीक है, वो then कहता कोई buddhi बात will नहीं, not convey ले लो, whether it is good or bad. थोड़ा मैं Then he will simply इंसुलिन का give इंजेक्शन लगा excuse लूँगा, that I'll take some insulin आपका injection or लीवर some अच्छा नहीं tablet, होता है। and then he will तो इस start प्रकार giving the वो logic कुछ that even if I take it तर्क देगी sometimes, हमको then कि what will अगर वो happen? हमारी So ढकी हुई है। when the buddhi is covered by ढकने का मतलब desire, यही it है gives this kind of logic. ज्ञानम एतेन, एतेन मतलब काम रूपेण, नित्य वैरिण, दुष्पूरेण, अनलेन च, ये सारे इसी के विशेषण हैं। So these are एतेन the काम same रूपेण, adjectives. ये शत्रु जो है वो काम के रूप में आता है, This enemy comes in our life as desire. इसलिए भी बताया था कि Bhagavan had ये told this आग earlier जो also है that it जैसे covers our buddhi, धुआं अग्नि को ढकती है, like धुआं fire covers, like आदर्श smoke को ढक covers देती है, fire, और बच्चा गर्भ में the जेव से dirt ढकता covers है, mirror.
and the संस्कार womb हमारी covers बुद्धि the को embryo. बनाती है इस काम रूप से। Similarly, desire काम covers the रूप शब्द buddhi. जो है इसका मूल अर्थ होता है जो अपने कामना के अनुसार अपना रूप बदल सके। Kamarupa actually means वास्तव में one who can change his form according to desire. ऐसा It is मतलब called Kamarup. काम रूप। तो काम रूप वास्तव में असुरों को कहते हैं। So असुर होते actually, हैं ना, asuras are known बदल as लेते हैं Kamarup. Asuras स्वर्ण can से, change their form, और like उसने स्वर्ण Marichi. का अपने आप को स्वर्ण का मृग बनाया, So he ठीक है ना, मृग मरीचि का। took the form of a golden deer. तो वो है तो मनुष्य है लेकिन उसने मृग का So रूप actually, he धारण is किया, a उसको बोलते हैं काम human, रूप। but he took the form of a golden तो ये deer. कामना So भी this is known हमें as Kamarup. आती है, मतलब है तो So this असुर है Kamna, desire, लेकिन हमको appears in different forms. लुभावनी दिखती है Originally, दूसरी। it is a demon, it's Asura, जैसे but it था तो मरीच, takes a रावण very का भाई beautiful था form. लेकिन Like वो राक्षस Marich हो गया। was Ravan's uncle, but he appeared as a golden और deer. उसके कारण जो है सीता जी का उन पर मन आ गया, And then Sita Devi मृग जी का। started desiring तो that इस golden प्रकार deer. ये जो विषय हैं ये ऐसे अच्छे Similarly, लगने लगते these हैं। sense objects they appear attractive to ये us तो यहाँ when काम our रूप का buddhi मतलब becomes कामना के covered रूप में जो by आते हैं। the kamna desire. और इनको कहा है कि ये नित्य वैरी हैं। And they have been addressed as Nitya क्योंकि Vairi, वास्तव क्योंकि अगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई eternal enemy. Because if तो our अर्थ चला गया। buddhi is lost, then our ये life बात is बार बार wasted. भगवान गीता में कहते Bhagavan हैं, पहले भी tells this again and again. He योग told earlier also. हमने प्रवचन किया दूसरे अध्याय में। और बुद्धि से ही कहा कि इसी का प्रयोग करके आप इस दलदल से निकल सकते हो। And he also said that you can get out of लेकिन अगर वो this बुद्धि delusion by हमारी using buddhi only. ढक जाए, But if the buddhi ढक itself जाए, gets दूषित हो covered, जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो फिर if it becomes हमारा corrupt, उद्धार कैसे हो सकता है। then how can तो हम we इसी में be फंसे रहेंगे। saved? तो Then we इसलिए will इसको always कहते remain हैं caught in वैरी, this. वही होता है ना That's why शत्रु। it is known as any called addressed here as enemy, because enemy is one who harms us. जो आपके जीवन में कष्ट देता है उसी को वैरी बोलते हैं। Vairi is one who तो gives यही जो inflicts है suffering upon us. मूल कारण So है हमारी this is the main सभी reason हमारी समस्याओं का। और इस of कामना के all our कारण problems in life. Because of this हमको भूल जाते हैं। desire, we forget क्योंकि ourselves. जब आपके मन में कामना आती है Because when तो you फिर are आप influenced by अपने से desires, बाहर हो जाते हैं ना। then आप you are अपने out of स्वरूप को yourself. भूल कर You forget your जिस वस्तु swarupa, विशेष की आपको कामना है उस कामना को आप सोचने लगते हैं, उसका चिंतन and करने then you लगते हैं start कि मुझे उसको कैसे contemplating प्राप्त on होगा। the object which you are desiring. तो ये कामना जो है ये दूसरा काम यही So करती है this desire, कि what else आपको it अपने से does? दूर ले जाती है। It takes us away from ourselves. और दूसरा ये काम ये करती है And कि आपको its another job भविष्य में is ले जाती है, वर्तमान से। it takes us to the future. From the present, it takes us to तो future. वास्तव में समय तो Actually, वर्तमान ही है, time is लेकिन always in कामना के present कारण only, हम but due to kamana or भविष्य desire, का सोचते रहते हैं। we keep thinking about the future. तो मनुष्य का मन इसलिए फिर भविष्य में ही घूमता रहता है। That's why the human mind always roams तो around ये in वो the काम जो future है only. कामना करती है। So this is what और फिर आपको kamana ऐसा does. लगता है कि जब And मेरी ये then कामना you पूरी हो feel जाएगी तब मैं as सुखी if होऊंगा। when your desire will be जैसे थोड़ी satisfied, सी then you will become दूर से happy. देखें तो ऐसा Like a लगता है कि horizon from far सूर्य distance, पृथ्वी को स्पर्श कर it रहा है, मैं appears जाऊंगा as उससे if हाथ लगा sky लूंगा। is जैसे आप चलते जाते हैं touching अपने the आप earth. मिलता जाता है। But आप and then I उस can touch it if I reach वर्तमान the से end. अपनी But गति then से as you चलते keep चलते moving ahead, then तो that कभी आपको also हाथ नहीं keeps लगेगा। moving ahead. You will never be कामना able to ऐसे ही catch है, it. आपसे So दूर दूर desire चलती is रहती like है। that. Desire, कामना तो अंदर बैठी है लेकिन विषय although desire is जो sitting विषय है inside, but जैसे the ज्ञान और कृष्ण sense में भेद object होते हैं ना, that we are desiring, that is तो away. विषय तो आपसे बाहर रहता है, दूर। The object is और away from us, उसके प्रति आप दौड़ते रहते हैं और वो भी आगे बढ़ती and we जाती है, keep running after पीछे it, तो and that also आगे और दिखाई keeps देती है। running away. तो इस प्रकार से जो है हमारा मन बुद्धि
हमसे So in this way, वर्तमान our mind, से हम our intelligence, it takes us away from the present. नहीं है So what we do not have, कामना in order to have it, in order to obtain it, that is kamna, trying to obtain it, desiring to obtain it. नहीं है Kamana means there is something which we do not have and करने की इच्छा है we तो वो want to have it. इच्छा कहिए कामना कहिए और ये अनेक प्रकार में आती है ये कामना ही जो है फिर And क्रोध it में appears in many ways. यही मोह बनती है यही अभिमान बनती है यही मद It बनती है takes the form of anger, द्वेष illusion, राग सब इसी से envy, attachment, everything comes from this kamna, desire. जितने भी हैं तो ये सब इसी से निकलते हैं They all come from this desire only. तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी है मतलब जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है यहाँ वास्तव That's में why he तो said, the jnani, one who wants to obtain jnana, वो वास्तव में सिद्ध अवस्था निष्पन्न ज्ञानी नहीं है यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर है अगर उसको वास्तव में the jnani that Bhagavan refers to here is on the path of jnana. He is not perfected, because if he would have been perfected, ज्ञानी का then he would not have this enemy of desire. नहीं हुआ है So here jnani means he is not perfected. प्राप्त उसको नहीं हुआ है He has not got the experience of tattva, का वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उस but he wants to obtain the experience of tattva. Here jnani refers to the sadhak, whether he is on the path of bhakti or jnana or yoga or karma, क्योंकि सभी तो तत्व वस्तु because करना चाहते हैं all want to obtain the tattva vastu itself. The paths may be different, का ज्ञान हो but the goal is same, to obtain tattva vastu. उनको अनुभूति हो उसका साक्षात्कार हो So getting the jnana means to getting the experience, तब तो ये कुछ नहीं कर सकता उसको realization. So as of now he is not realized, because once he is realized he is beyond the three इसलिए gunas. जो कहा ज्ञानी नो नित्य वैरिणा ऐसे ज्ञानी की बात कर रहे हैं So he is talking about this type of jnanis. The other point is that Bhagavan has used the word nitya vairi. वास्तव में नित्य शब्द का मतलब यहाँ नित्य नहीं है जैसा Actually, the word nitya here does not mean nitya, because nitya actually means that which does not have any beginning and end. संभव है अगर अंत संभव नहीं है तो So this, so but here the it is possible, the end is there, or it is possible. शब्द का यहाँ पर थोड़ा अर्थ So हमको if it is literally nitya, then there is no point of talking about it. So here the nitya vairi means actually anadi vairi. आरंभ से जिसका कभी आरंभ नहीं This enemy is within us since beginningless और इसका अंत time. हो सकता It है is anadi, और वो but it can be destroyed. जैसा भगवान आते हैं ज्ञाने ने तो तदज्ञानम येषाम नाशम नासितम आत्मन है कि जिस ज्ञान से जिसका ज्ञान विनष्ट हो गया है तो वो फिर इसको प्राप्त करता है तो इसलिए So one whose ajnana is destroyed by this jnana, he obtains it. So here the word nitya has to be taken in the sense of anadi. विवेकशील And here jnani refers to one who is sadhak, one who has discernment, viveka. ज्ञानी का ये नित्य वैरी है तो So now here he is telling that this is the eternal enemy of the jnani, जो काम है क्या ये ज्ञानी one who has viveka. So then the question is it not the enemy of the ajnani, one who is ignorant? अगर कोई कहेगा चीनी खाना जो है वो मधुमेह के रोगी के लिए विषवत है If somebody says that eating sugar is not good for a diabetic patient, so that means one who is not a diabetic patient, he has no problem with the sugar. So similarly here, when Bhagavan is telling that this desire is eternal enemy of jnani, so is it not eternal enemy of the ajnani, the ignorant? It is, but he doesn't accept that point. The jnani, one who is wise, he understands, he accepts that this desire is my enemy. But one who is not wise, one who is not jnani, he doesn't accept that point. अगर वो भी इसको समझे That's why he always runs after, he always chases the sense objects. कि काम So he sees these मित्रवत है लेकिन desires as his friend, not as enemy. वो इस बात But at the end, he also gets misery, suffering only. वैरी होने
but he doesn't understand this point. So what is the meaning of this vairi or enemy here? So it basically means it is an obstacle on our path. भगवत It प्राप्ति के stops us from भगवत भजन achieving करने our के लिए goal. जो चाहते हैं, So as bhakti yogis, we are desiring to अवरोधक है, इसलिए realize हम Bhagavan, उसी को to बोलते get हैं कि अपने bhakti. कार्य को So this desire is प्रारंभ the करें। enemy on our कोई path. It is an obstacle on सुख our प्राप्त path. करना चाहता है, Every person wants जो to achieve व्यक्ति सुख में happiness, बाधा डालता है and उसको कहते हैं मेरा शत्रु। whoever puts obstacle in your path यही of achieving happiness, he is your enemy. So this desire फिर इसका जो also दूसरा puts obstacle on क्वालिटी our है spiritual paथ. वो बताते The हैं दुष्पूर्ण। next quality that Bhagavan is तो अब कोई explaining कह about सकता है कि this भाई कामना enemy है is Dushpurena. तो It कामना is पूरी करो insatiable. तो समाप्त हो जाएगा। So somebody may say that okay, if you have desire, just fulfill it किसी वस्तु की होती है ना, and वो it's ऐसी over, वस्तु है नहीं कि because जिसको desire is of an समाप्त नहीं object. होगा। अगर वो It is not भूख something which है, is पपीता never है, फल ending. खा लो तो If आपकी you भूख are पूरी हो hungry, जाएगी। then you eat food and your hunger is आपकी gone. इच्छा हो तो उसको प्राप्त If करो, you want भूख पूरी हो something, जाएगी। then just get it, तो and then that इसलिए desire will be ये gone. दुष्पूर्ण है, ये समाप्त नहीं होती है। So Bhagavan वो is telling no, इच्छा विशेष it will never be समाप्त नहीं होती, satisfied. It is insatiable. सारी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, Particular desire may be satisfied, विशेष but all तौर पे desires cannot be satisfied. अगर इच्छा So the समाप्त हो problem जाए is not of just satisfying one कोई particular desire. Even if one particular desire is satisfied and the other desire appears, जाति तो एक ही so है, you still have desire. नहीं है तो जाति तो फिर The एक ही है। jati is same only, desire is desire only. इसलिए उन That is कामनाओं को why कैसे समाप्त किया how जाए, to कहते हैं कि इनको पूरा fulfill करने से those desires. So he is telling here, सर्व कामनाम satisfying them भवन्ति, will not end. सर्व The satisfying desires will not put an complete end to it. It will not put a full stop to the desires. तो ये इसको उपभोग करने से ये कभी शांत होती नहीं है। So by फिर satisfying जब आप the उपभोग desires, करेंगे they will तो not उसका एक end संस्कार पैदा actually. होगा, Rather, सुख when रूप you संस्कार, satisfy the desires, you get a new samskara. पतंजलि महाराज कहते हैं। और वो जो राग पैदा करेगा वो राग से उसका जो Rag संस्कार will पैदा be होगा, generated संस्कार से फिर आपको because प्राप्ति you होगी, liked fulfilling that प्राप्ति desire. का मतलब फिर कामना आएगी। So you'll have the raga, and then again there will be desire, and again you will have to work to fulfill that desire. When there will be desire, then you will work accordingly to fulfill that desire. तो ये चक्र फिर चलता रहेगा। So तो this इसके cycle लिए will भगवान continue. कहते हैं कि ये That's दुष्पूर्ण why है। he says क्यों? it is क्योंकि हम insatiable. चेतन हैं, Why? हमारा Because स्वरूप जो we है are conscious वो beings. जड़ नहीं है, We are not वो matter. चेतन है। We are conscious. और चित्त की पूर्ति जो है वो जड़ से नहीं हो And सकती। consciousness cannot be fulfilled by matter. अगर आपके पास में कोई पात्र है और उसमें दूध है, If you have a vessel which दूध contains से milk आधा भरा हुआ पात्र and है, it is half filled तो with उसको अगर milk, पूरा भरना है आपको so तो if उसमें you दूध have डालेंगे तो to पूरा भरेंगे, fill it completely, उसको then you will आधा fill भरा हुआ milk छोड़ only. देंगे। If you fill something तो आप else, उसको again, if you कैसे pour उससे something else, then it will पूरा not remain करेंगे? milk anymore. तो If you ये want to fill it completely with milk, then you have to श्री जीव pour गोस्वामी more milk तत्व only. संदर्भ में उदाहरण देते हैं Like कि Sri Jiva आपके पास Goswami में explains in Tattva कोई Sandarbha, स्वर्ण का आभूषण है, that he gives an example that उसका if you कोई have a हिस्सा golden टूट गया ornament and some part of that तो उसको breaks, अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए so स्वर्ण की आवश्यकता है, उसमें लोहे से if कुछ you नहीं have to होता। repair it, you have to repair it by तो इसी gold प्रकार only, हम जो not by हैं चित iron. स्वरूप हैं, Similarly, तो हमारी पूर्ति जो है वो we किसी are वस्तु से ही हो सकती है। conscious beings, so we can be fulfilled by जो भी consciousness आप काम only. करते We हैं can be satisfied by that only, वो जड़ वस्तु not नहीं है। by matter. कोई प्रश्न कर सकता है कि जो भक्त लोग हैं वो भी तो कामना करते हैं ना, So भक्ति की somebody may कामना करते say हैं, devotees, they also desire. So they desire for क्या वो bhakti. भी उनकी वैरी है? तो नहीं, वो वैरी नहीं है। So is that desire also their enemy? No, that desire is not an enemy हमारे स्वरूप से संबंधित है। because that is related to दूसरी our बात यह है कि swarupa. भगवान तो वास्तव में सबको सब समय में प्राप्त ही हैं, And another point is Bhagavan is क्योंकि anyway है तो नित्य, always available. तद्दूर है तदंतिक है, वो दूर भी हैं पास भी हैं, उनसे पास तो और कोई चीज है नहीं, हमारे स्वरूप से सबसे पास में कोई है Nobody is nearer to वो our अपने Swarup अंदर ही than है, Bhagavan himself. वो He बाहर is नहीं आता inside दिखता नहीं us. है।
He is not just inside the body, he is वो तो inside the प्राप्त ही Atma है, also. So he is anyway always available to everyone. But due to ignorance, और भूले हुए हैं due विस्मृत to हैं, Ajnana, we तो इसीलिए are भी इस do कामना को not भी remember पूरी हो him. नहीं सकती है, और उसकी तो है ही। अगर हमारी कोई कामना We are not पूरी हो aware of सकती है him. तो वो भगत प्राप्ति की हो सकती है। So if any desire can be भागवत भक्ति का satisfied, मतलब ये है it कि is only the भगवान को desire of attaining प्राप्त Bhagavan करना that है, can be satisfied. Because यही मतलब होता है ना। और अगर वो it, पूरी होकर फिर बहुत कामना satisfying a चाहे तो desire अभी भी रहेगी। means it should not come again. Because if you satisfy a desire and that desire appears again, तो then how इसलिए can you say it जितनी is भी satisfied? कामनाएं हैं That is why वो कभी all the पूरी material होती ही desires, नहीं। they will never be satisfied. It is not possible. उन भौतिक कामनाओं को आप दो में विभाजित कर सकते हैं। एक You जो can हमारे divide those material desires in चाहिए, हमारे two. शरीर का One देखभाल is चलता रहे, that that is one that is needed to maintain our body, और उनको इसलिए like काम food, कामना कहा etc. जाता है। That has उससे to be ज्यादा that has to be taken. That cannot be counted as कोई kamana. But anything कारण that नहीं। we desire more than our इसलिए necessity, ज्ञानी लोग it तो becomes the यही cause of our कहते हैं bondage. कि इसकी पूर्ति Otherwise, कामना करते हैं, Gyanis, uh, लेकिन क्योंकि वो they केवल also take शरीर food, धारण they करने के also लिए wear है, clothes. ना कि But that दूसरे is just to maintain the body, not as a इसलिए sense इसको कामना enjoyment. नहीं कहते, क्योंकि वो मिल जाती है तो उसके So बाद that is not फिर called kamana, ज्यादा और because इच्छा नहीं करते। once they get what they need, what तो is इस their प्रकार से अगर necessity, हम they do देखें not तो desire ऐसा more than लगता that. है जो कामना हमारी So if पूरी हो we सकती है reflect वो properly, भगवत संधि we संबंधी will कामना ही understand पूरी हो that पाती है। the only desire that can actually be बाकी जो satisfied कामनाएं is हैं desire related to उनमें कामना Bhagavan. विशेष आपकी पूरी हो जाए, लेकिन कामनाएं Otherwise, पूरी नहीं some होती। particular material desire may get बाकी तो satisfied, परिवार but चलता ही in रहेगा। general, material desire itself will never be satisfied. It अभी has a भी whole family. Some material desire or the other will always keep appearing in the mind. इसलिए So when it उसके लिए appears, प्रयास क्यों करें। then for that, तो इसलिए शास्त्र में when बार बार you कहते हैं anyway cannot satisfy सुख it, सुख है, why do you endeavor to fulfill it? दुख बगैर प्रयास के आता है। सुख That's why Shastra says, just like you get उसके लिए sukha प्रयास करना without पड़ता है। endeavor, you get dukkha यदि without प्रयास endeavor. करना है So what is तो the उस point of endeavoring for सुख स्वरूप material भगवान को fulfilling material desire? We should endeavor to दूसरा अर्थ fulfill ये the है कि desires related to ज्ञान Bhagavan, related to his ज्ञानम seva. ज्ञानम तेन, तो ज्ञान का मतलब ये हमारा स्वरूप भी हो सकता है So here Gyan कि can हम वास्तव में refer to ज्ञान our स्वरूप हैं। Swarup also, ज्ञान that स्वरूप actually मतलब we are Gyan Swarup. चेतन है, Gyan Swarup here means that we लेकिन are अभी हम अपने conscious, आप को जड़ समझ रहे हैं। but currently we are हम considering शरीर ourselves से as तादात्म्य कर रहे Jad, हैं, matter. अपने आप को शरीर We मान have रहे हैं, done Tadatmya तो ये भी with the body, आवृत है। and then we consider ourselves तो to be the वास्तव में body. मूल So this is also आवरण तो covering. यही है। So actually the real covering is माया this जो दो only. कार्य करती है, Maya does एक two आवरण things. और दूसरा विक्षेप, One is avaran, that तो is वास्तव में जो covering, and मूल other is आवरण हमारे vikshep, ऊपर है putting into illusion. माया का, वो यही है So कि हम the अपने original स्वरूप को covering of विस्मृत Maya कर चुके हैं। is this only, that we have ये तो forgotten जानते हैं कि हम our हैं, Swarup. We know लेकिन that ये we कौन है, exist, we are, but हमारा who we वास्तविक are, स्वरूप क्या है, what is our ये ढका Swarupa, हुआ है this knowledge, this is covered माया से। by Maya. और केवल ढका ही नहीं हुआ है, उसके And it साथ is में not just covered, फिर विक्षेप भी है then there is कि हम vikshep ये also. शरीर है, We ये think that we हमारी are this आत्मा body. है। So this is our real enemy. तो इसी इसी से सब कामना निकलती हैं। फिर So कामना का जो from this only all the other desires they arise. This is the यहाँ seed तो केवल of वो विवेक के desire, लिए seed of है, kamana. Although here he is वास्तव में देखा जाए uh, going till the वास्तव में viveka जो only, है but if you वो analyze हमारा स्वरूप carefully, जो ढक गया है वो है, our swarupa itself has got covered, उसके कारण फिर ये सब चालू होता है। and because of that तो all ये these विवेक things हमारे अंदर happen. वास्तव में है, ढका So हुआ है actually we have इसलिए this power of discrimination within us, because if it is जैसे covered, हम it means अज्ञान it को is there. अनादि अज्ञान बोलते हैं ना, Just like we address this वास्तव में वो ajnana as anadi ajnana, अनादि कर्म, anadi karma. अनादि अज्ञान, तो ऐसे ही हमारे अंदर अनादि Similarly, विवेक भी है।
we have this anadi vivek, anadi power of इसका discrimination also within us, and that is covered by this लेकिन desire. But इसका होने के कारण हमको ये पता भी नहीं है कि हमारे पास है ये, being if it is, since it is covered, क्योंकि we do not even know that आपके we साथ actually अगर have कोई it, व्यवहार करता है because whenever somebody deals with you, तो आपको ये इतना विवेक तो रहता है कि मेरे लिए you क्या have ठीक this है, much of तो vivek आपके साथ or कोई discrimination, that what is right आपके for साथ me, what झूठ is बोलना wrong, करता है, what झूठ is good, बोलना what is bad. Like if somebody cheats you, तो आपको somebody lies, then you do not like it. नहीं, आपको तो पसंद नहीं आता ना कि कोई आपको झूठ बोल You के do फिर not आपको like धोखा दे। if somebody तो इसका lies. मतलब आपको इतना विवेक है कि झूठ बोलना It अच्छा नहीं है। means that you have this much of लेकिन discrimination, इसका अगर vivek, ज्ञान दिया हो या that ना हो, uh, it is lying is आप not good. जानते हैं ना, कोई अगर आपके प्रति We all know हिंसा this. करता है, If somebody is तो आपको violent अच्छा नहीं towards लगता, कोई you, आपको मार दे, कोई आपको you एक do not थप्पड़ like मार दे it. तो आपको अच्छा नहीं If लगता, somebody slaps you or beats you do not like आपकी it. कोई चीज चुरा ले If somebody steals your आपको अच्छा नहीं property, लगता। you do not like it. तो इसका मतलब So it चोरी means करना अच्छा नहीं है, stealing is not good, हिंसा करना अच्छा नहीं है, violence असत्य is not बोलना good, अच्छा नहीं है, झूठ lying is बोलना not अच्छा good, नहीं है। cheating is not ये सब good. जानते हैं Everybody knows this क्योंकि ये उनको अच्छा नहीं लगता है। because they do not like this. और अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को भी And अच्छा if नहीं I do लगेगा। not like it, then it is obvious इसी that the के other लिए person will also भगवद not like गीता it. में That's आत्मोपम्येन why in सर्वत्र sixth chapter Bhagavan will speak. संपश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो कहते हैं आत्मोपम्येन He says सर्वत्र, that अगर हम अपनी आप से तुलना if करके दूसरों को भी देखें, if इसको we तो see others साइकोलॉजी में एम्पैथी बोलते हैं, comparing with ourselves, this is called तो ये empathy सबसे बड़ी in एम्पैथी है psychology. विवेक में। So this is विवेक जो the मेरे biggest साथ झूठ empathy, बोलता है that तो if मैं उसको somebody lies to me, I do not उस like व्यक्ति it. को पसंद नहीं करता हूँ। I do not like a लेकिन जो person झूठ बोलता है who या cheats, जो who मेरे प्रति कोई lies, हिंसा करता है or तो if मेरे को अच्छा somebody नहीं is लगता। violent towards me, I do तो not जब मेरे like को it. अच्छा नहीं लगता है So तो when I अगर do मैं not दूसरे like के it, साथ में झूठ बोलूंगा या and if दूसरे के साथ में I हिंसा करूंगा या दूसरे की lie वस्तु to चुराऊंगा someone else, if I तो steal इसका somebody मतलब else's उसको भी अच्छा नहीं property, लगेगा। मैं he अपनी will तुलना also करके not समझ like it. सकता हूँ नहीं समझ सकता। So I can understand it by reflecting on तो myself ये only. विवेक तो हमें प्राप्त है, So this Vivek is already there बिना with किसी us उपदेश के दिए हुए। without any बच्चा भी जानता है instruction. इस बात को। Even a small child understands this आपके much. पास में कोई खिलौना है, कोई खाने की चीज, आप उससे If ले he लो has a toy and if you take it away from him, he या becomes उसको कोई upset or थप्पड़ मार no? दे तो वो If somebody slaps रोता है या नहीं, the child cries or no? या उसको आप कहें कि मैं आपको थोड़ी देर में If चॉकलेट you दूंगा tell the child that I और will give आपको you a थप्पड़ मार chocolate, कर देकर आप you do चॉकलेट this, छीन and लेंगे उससे, then you do not give the chocolate, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? then does he like उसको तो that? आपने अभी कोई ऐसा उपदेश दिया नहीं है ना कि सत्य बोलना चाहिए, So you have हिंसा not नहीं करनी चाहिए। instructed him, you have not taught him that we should not lie, पर we should ये not ज्ञान, ये विवेक तो steal. पशुओं में भी है। But even the animals have this vivek. आजकल कुत्ता रखते हैं, कुत्ते को आप खाना खिलाते Nowadays हैं, उससे प्रेम people करते हैं keep तो कितना खुश होता है वो। keep pet dogs. If you उसको feed the pet उसको dog, अच्छा he लगेगा। likes it so much. कल If you परसों beat में the देखा dog, will मैंने it मेरे like it? सामने कुत्ता आके पूंछ हिलाता है, So when उसके you पीछे पीछे if you चलता keep है, food in front of the सो जा dog कहीं runs आके after पूंछ the हिलाता food. है। So has the dog heard any lecture? नहीं, No. तो ये विवेक जो है So ये this है viveka is there. हमारे सबके पास। We all have this power of लेकिन discrimination. इस विवेक को जो है हम But केवल शरीर संबंधी ही रखते हैं। we use this vivek only in relation to our body. और दूसरा, This is the first इसका point. उपयोग And secondly, केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। we use it only to fulfill our selfish और इसी desires. विवेक को हम दूसरों के लिए भी If उपयोग we करते use हैं। this vivek, आप this धर्मात्मा power कहेंगे, of discernment, आप किसी को धर्मात्मा discrimination कहेंगे, महात्मा in कहेंगे, respect to others ऐसे also, लोगों को इतना then ज्ञान we है will become dharmatma, जो we will अपने become a शरीर से, saint. अपने परिवार से ऊपर उठकर भी सोचते हैं कि भाई दूसरों के साथ अगर Saint मैं is the गलत, person who rises अगर मैं दूसरों above को बेहतर fulfilling बनाऊंगा his own तो desires दूसरों को तो and अच्छा thinks लगेगा। about others also. तो ये तो आप That विवेक if का I मतलब है cheat कि आप ये others सोचेंगे कि for दूसरों को feeding अच्छा my लगेगा family, तो is it आप correct? It आपको is लगेगा not कि right. ठीक है, ये बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, And if you understand this and if you actually live by this इसको principle, सब आता you है, then you will be saint. People will call you a ये saint. सत्यवादी है,
that you are truthful, you do not cheat others. इस विवेक को अगर हम उपयोग करने लगें So if तो we हमारे start using this vivek, this discrimination, then in our life तब्दीली आएगी there will be और a फिर major हमारा change, ये जो आवरण है ये घटने लगेगा and then this covering will क्योंकि start जब हम reducing. इस धर्म के विरुद्ध में काम करते हैं इसी को Because धर्म when we act, this is called शास्त्रों dharma. में In Dharma इतनी Shastra, जो कहानी और इतना in जो Dharma Shastra, so many stories and ये सब instructions are there. इनके लिए They ही are है meant to इसी explain के लिए बड़े बड़े this point itself. पुस्तकें लिखी गई हैं चाहे In वो order to explain this, so many उपनिषद की हैं books, चाहे so हमारे many इतिहास है पुराण है stories have been इन्हीं written, चीजों को समझाने के लिए whether it is our Puranas, the धर्म को Itihasas. समझाने के लिए They are all meant to explain dharma इसका only. मूल हमारे पास सबके पास में है ये मूल सिद्धांत जो है और ये सब पर And we लागू all होता है have that vivek, ये and ऐसा it is नहीं है कि applicable खाली to हिंदुओं के everyone. लिए और मुसलमानों के It's लिए not that it is just it is सबके just लिए for Hindus, not for Muslims or anybody else. No, this is for everyone. मात्र के लिए है This is for every human being. तो इसका अगर हम अपने जीवन में इस विवेक को अगर हम उपयोग करने लगें So in our life, इसको if समझ we कर start using तो this क्या होगा कि vivek, धीरे धीरे हमारी बुद्धि then what will happen is इस slowly आवरण से our बाहर buddhi निकलने लगेगी will जिसको भगवान ने कहा यहाँ पर कि start आवृत्ति getting नित्यवानिते ज्ञान disentangled नित्यवैरिणा from this covering, और फिर हमको थोड़ा प्रकाश और दिखने लगेगा जो पिछले and श्लोक में कहा ना उन्होंने कि we will start seeing more light. आपका We जो will start becoming more enlightened. दर्पण की तरह जो आपका चित्त है वो ढक गया है धूल से तो As he धूल said थोड़ी हटने earlier, लगेगी that the dirt has covered the जिससे mirror, so the dirt will हमें slowly और start उपयोग going होगा away, कि हाँ and वास्तव में you will start realizing your मैं स्वरूप हूँ swarupa. और फिर You will ये start understanding that yes, I am a conscious being, समझ में आने not लगेगा matter. And then you will start तो understanding इसलिए इसको spirituality properly. समझना है So that's why और we have यही to कारण है understand कि this. वास्तव में सुख की प्राप्ति जो है And वो we have इस to realize that कामना की पूर्ति से नहीं होती है we cannot become happy बल्कि by उसके लिए fulfilling है और उसके लिए उन्होंने the material desires. दूसरा भी शब्द As दूसरा Bhagavan said, it विशेषण is लगाया dushpura, अनलेन है and he uses one more adjective, अनल जो है that is analena. एक तो अनल शब्द का जो मुख्य प्रयोग किया जाता है वो So अग्नि one के लिए anal is primarily used दावानल for fire, like we say davanal, फॉरेस्ट फायर तो forest अनल को fire. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि So अगर अग्नि में जब anal हम here आग डालते means हैं that if तो you वो अग्नि तो उससे if you स्वतः pour ही बुझ fuel जाएगी into the fire, वो बढ़ती then the जाएगी fire will not be doused. और Rather, अनल का it मतलब will अलम इति increase. अनल अलम का And मतलब निधि anala also means निधि that से कहते हैं enough. कि हम बस इतना ही That is enough. तो जिसका कभी अंत ना हो उसको अनल So बोलते हैं anala जिसमें means ना that अंत which हो will अनलम never end. अनलेन कि इसका इतना नहीं होगा कि हाँ It बस has मेरे no को इतना end. मेरा पैसा मिल गया इतना ही बहुत है इससे So it ज्यादा is मेरे not को that okay, I have earned this much and that is enough. I सब don't किसी के need साथ नहीं any होता more. No, this doesn't happen with कुछ लोग everyone. होती है वो बात अलग है लेकिन जो व्यक्ति If somebody is लगे हुए satisfied, होते that हैं is a समय different देते हैं matter. कि But अब मेरे those को who are इतना engaged मिल in गया earning money, अब they मेरे never को feel इस that I have had करते enough. ही I रहना do है not need anymore. यहाँ इन्वेस्ट They keep करते on रहना है working and working, invest here, invest there, तो अनल की तरह buy चीज है this, उसका मतलब that. उसमें कभी So अलम it अलम continues बुद्धि का मतलब endlessly. कि हाँ और कुछ नहीं है Means they do not have the तो alubuddhi, इसका means कारण यही है then they कि nothing is ईश्वर enough for और them. सुख जो है वो विषय वस्तु से So है why is it like this? Because we वो think that वास्तव में our आपको happiness, we सिखाता get है happiness from material objects, but कि actually जब आपको किसी material की objects do कामना not पूरी make us happy. Because when you have आपका desire मन for something, then your mind पकड़ लेता है is immersed क्योंकि in वो that. वस्तु आपके मन को पकड़ लेती है It means that और फिर आप object, उसी it के लिए holds काम on करते to your रहते हैं mind, उसी के लिए and then प्रयास you करते रहते हैं continue और contemplating जब on वो that. आपको वस्तु You मिल जाती continue है तो working आपको hard लगता for है कि that. बस आपकी कामना पूर्ति हो गई And अब when you मुझे have क्या चाहिए when you have got तो that उसको object, when you मानो achieve that फुलफिल object, बोलते हैं ना जब किसी की इच्छा then पूर्ति हो you जाती है feel कामना पूरी हो happy. जाती है मानो आपको एक बढ़िया कार चाहिए Suppose you want a good आप उसके car लिए मेहनत करेंगे and then you प्रयास are करेंगे working 10 साल hard तक for आप that. उस कार के बारे में सोचते रहेंगे कि अब मेरे को मिले फिर जब वो मिल You keep जाएगी तो आपको thinking when I will get that car. तो जब वो कार So मिली तो खुशी जो है वो
कार से नहीं आई लेकिन So कार when के you तौर पे when you get that car, your happiness is not from that car. Basically, that car was holding on to your mind, क्योंकि जैसे and कभी आपका मन it has released किसी your विषय mind. में That's why उलझ you feel जाता है, happy. रात भर सो नहीं So सकते, उसके when बारे में your mind सोचते becomes रहते हैं, disturbed by something और or जब तक वो someone, मन you keep स्थिर thinking रहेगा about that object or that person only. So जब unless मन जो that है वो is that releases your mind, विचलित you do not होता get है, sleep. It continues disturbing तो you. ऐसे ही कामना के जो विषय हैं वो आपके मन को विचलित Similarly, करते रहते हैं। the जब आपकी sense कामना पूरी हो objects, जाती है तो they मन keep विचलित disturbing होता है, you. इसलिए सुखी When होता your है, desire is इसलिए satisfied, नहीं। it मन leaves को your खुश है तो mind फिर and आपको then you मन feel को खुश happy. रहना चाहिए, लेकिन Otherwise, that मन same को खुश car बात should करने be से giving you happiness whole life. तब ये तो But उसका after few खत्म days, हो जाता है ना। you do not feel like that तो सुख anymore. जो है वो वास्तव में उसके त्याग से हुआ है। So you have गीता actually में got भगवान एक शब्द sukha, बोलते हैं, त्यागत happiness शांति by अनंतरम, giving it अपने up त्याग से from your शांति mind. मिलती है। So Bhagavan says that peace is उससे achieved शांति through मिलती है। tyag, तो renunciation, not मेरे by बारहवें bhog, not by अध्याय में enjoyment. 12वें अध्याय में So बोलते this हैं is a very deep point that Bhagavan makes. त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से शांति। तो हम उल्टा सोचते हैं, So we हम think सोचते in हैं the कि जब ये opposite चीज़ way. हमको मिल जाएगी तब We हम think that when we get it, we will become peaceful. तो यही बुद्धि का ढकना है। So this is the covering of आत्मैवैरिणी buddhi. ज्ञानी नो नित्य वैरिण, यही नित्य वैरी है कि This is कैसे हम the eternal बुद्धि को ढक enemy, दिया, how और it जो covers our वास्तव buddhi, में दुख का कारण है उसको हम सुख का and कारण समझते that हैं। which is the cause of misery, we consider और it जब to be the cause of हमारी बुद्धि happiness. को भी But सही actually, प्रकार से if विश्लेषण our करेंगे buddhi is in तो the वास्तव में हमको proper पता frame, चलेगा। and if we analyze properly, then actually we will understand. हमारी बुद्धि इतनी भी ढकी हुई हो सकती है कि ये बात हमारी समझ में ही नहीं आएगी जो And हमको maybe our buddhi may be covered to such an extent that we do not even understand this कैसे point. मैं सहमत Like नहीं some हूँ, people say तो that आपको I पता am चल not able जाएगा to कि understand वास्तव में this, I do not agree to all हाँ, this. बात तो वास्तव में यही है। But when और जब ये आपकी समझ में you आ जाएगा slowly come out तो of अपने it, आप को आप then काम you करने start लगेंगे। understanding it. And once you तो understand this point, then you work accordingly. जो विषय हुए हैं जिसमें हमारा मन अटका हुआ है So, और the उसके कारण objects सुख which जब are मिलेगा तो holding आपको on सुख to our जब स्वीकार mind, करेंगे तब मिलेगा। actually we will ये become बात happy when दूसरे it विषय में releases our आपको mind. ठीक से समझ आ भी सकती है, Now, लेकिन जब ये in पैसे की for बात other आती है sense objects, we still understand this, धन की but when बात it comes आती to है तो money, वहाँ ये बहुत कठिन होता है कि धन को छोड़ के कैसे सुख मिल सकता है। then we do not understand that how we can be क्योंकि हम तो happy यही by सोचते हैं कि giving धन up मिलेगा तो wealth. अच्छा आएगा, धन Every को छोड़ person के कैसे thinks सुख that मिलेगा। by getting wealth we will be happy. और उसका कारण ये है कि धन जो है उससे हम दूसरी वस्तुओं को प्राप्त करते The हैं। reason is that we we acquire other तो objects ऐसा through लगता है wealth. कि नहीं So it इसके कारण से seems हमको सुख मिलेगा, that लेकिन it will give us happiness. एक बहुत अच्छा वाक्य है गोस्वामी तुलसीदास का So Goswami Tulsidas ji has पराधीन makes a wonderful सपने हो सुख statement नहीं, कि जो व्यक्ति पराधीन है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। that one who सुख is तभी मिलेगा जब हम स्वाधीन होंगे, dependent on other, स्वाधीन स्वतंत्र होना he चाहते हैं। cannot be happy. That's why every person पराधीन wants होने to नहीं be दे सकते, independent. Nobody wants to be लेकिन dependent. जब आप कामना करते हैं किसी Nobody वस्तु wants to की be a slave. तो आप उस वस्तु के पराधीन हो जाते But हैं, when उस वस्तु you के अधीन हो start जाते हैं। desiring any तो object, इसी सिद्धांत you को आप become लगाने के बाद enslaved जब by आप that in your mind. आकांक्षा करते हैं तो आप धन के So अधीन हैं, when you और are जब आप धन desiring के wealth, अधीन हैं then you तो become dependent on wealth, उससे आप सुख की and प्राप्ति नहीं then कर सकते। you cannot be happy. तो इसको समझना थोड़ा कठिन है, So understanding this is समझ little में थोड़ी difficult, कठिनता होती है, that और समझ पाना how we can become वास्तव slaves में of बहुत wealth, कठिन है। always dependent on wealth, and getting मूल out of it सिद्धांत is क्या very है? difficult. मूल सिद्धांत यही So है the what is the main point? कि The main point is हम सुख चाहते हैं, that we want happiness, और अगर हम सुख चाहते हैं and तो if we सुख want जरूरी भी happiness, है, then और दुख का जो कारण है whatever is against वो our भी जरूरी है। happiness, whatever is the सुख cause of चाहते हैं our तो हम सुख को suffering, भी we चाहते have हैं, to give it up. और
not, it is not that we want sukha, we want happiness also, फिर कैसे सुख मिलेगा? but we do not want to give up the cause of our suffering also. इस श्लोक में जो So that श्री is कृष्ण what बता रहे हैं, भगवान this बता रहे verse is हैं कि ये teaching, आपका वैरी है। that it is your enemy. तो ये कामना जो है ये दुख का कारण है, So this kamana, ये desire, हमारा is शत्रु है। the cause of तो इसको जब suffering. तक आप पकड़े रहेंगे और आप सोचेंगे So कि as सुख long है, as you keep holding on to that and thinking मूल that I बात will ये be है। happy, that is not ये possible. बहुत गहरी That बात is the main भगवान point. यहाँ बता रहे हैं। And this is a very उत्तम ज्ञानम deep point विद्धि that Bhagavan is ज्ञानिनो making here. नित्य वैरिण। और ज्ञानिनो मतलब अज्ञानिनो अपि। ये ज्ञानी का वैरी है So तो when अज्ञानी he का says बहुत that बड़ा it वैरी is है, the ऐसा समझो। enemy of a अगर ज्ञानी jnani, का वैरी then है you can say it तो is फिर the तो greatest enemy जबरदस्ती of the करेगा, ajnani, of the क्योंकि उसको ignorant पता नहीं चल person, रहा है। because he is not even उसको ये नहीं understanding. पता है कि ये मेरा वैरी The है, jnani at least मेरा understands शत्रु है, that it is इसलिए my इसको enemy, so he can do अज्ञानी को तो ये भी नहीं पता कि something to मेरा protect वैरी है, तो उसको himself. मित्र मान But the लेता है। ajnani does, the इसलिए ignorant भगवान person doesn't even यहाँ know बताता है कि he वैसे is considering this सोचता है desire कि to be सुख his है, friend, and he is feeding the desires ये continuously सुख and है। thinking that I will be happy by this. But this is तो not ये है possible. इस श्लोक का So मर्म, this is the इसलिए purport काम रूपेण of विद्धि this दुष्पूरेण verse. अनलेन च। तो उस वैरी से पीछा छोड़ने के लिए So getting disentangled, to get released from that enemy, if we उससे have पीछा an छुड़ाने के लिए enemy, शत्रु को then नष्ट how do करना we पड़ेगा। तो get, नष्ट करने के लिए then what we have to do is we have to destroy the enemy. आपको पहले जानना पड़ेगा कि वो So in कहाँ order है। to destroy that, first of all you have to उसको understand where पहले is it जाना है। located, अगर आपको यही पता नहीं है what कि is its शत्रु कहाँ पर है तो address. उसको कैसे If you नष्ट don't even करेंगे। understand where is the enemy, how will you और destroy एक it? बार पता चल जाए तो फिर आप मिसाइल छोड़ सकते हैं ना। Once you understand, you can release your missile. मिसाइल जाती है जीपीएस, तो वहीं जाके अटैक करती है सीधा। By GPS technology, तो missile सबसे पहले attacks the उसको पता target लगाना very है कि precisely. हमारा शत्रु So जो है first of all, we have to understand किस जगह the बैठा हुआ है, exact location कहाँ where बैठा हुआ है। the enemy is seated, उसके लिए भगवान where the enemy is दूसरा hiding. श्लोक बोलते हैं। So for that, Bhagavan बहुत speaks the next वैज्ञानिक verse. तरीके से भगवान हमको समझा रहे हैं। Bhagavan is explaining to us in a very तो कहते हैं कि systematic इंद्रियाणि मनोबुद्धि manner. यस्य अधिष्ठानम् इष्यते उच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो उसके तीन ठिकाने So, बताए इन्होंने। so Bhagavan tells that there are three काम locations का of this निवास enemy. जिसको कहा The गया है। senses, the mind, एक and जो the माध्यम intellect से विवेक are को said to be the abode of मार्ग से desire or calm. भ्रमित कर देता है। Covering discernment through these ये faculties, तीन desire जो है deludes इंद्रिय, the मन embodied और बुद्धि, self. So इसका Bhagavan is अधिष्ठान telling है three locations: senses, mind, and ईश्वर intellect. You और can add two more to this. One is the sense object, and the other is our ahankara, so that we ये वासना understand पांच properly. इसके So ठिकाने हैं actually, these are its जिनमें वो बैठा five हुआ है। locations where ईश्वर is में it is बैठा हुआ है seated. क्योंकि पहले भगवान ने स्वयं ही कहा ना So इसके it is it is इंद्रियस्य located in the sense राग objects. द्वेष व्यवस्थित। Bhagavan told earlier, क्योंकि पहले कह चुके हैं तो अब दोबारा नहीं कह रहे हैं उसको। because he told that earlier, that's why he is not समझने adding वाले that जो point in this list. समझदार लोग हैं याद रखेंगे। He तो विषय के assumes बारे में तो that पहले ही कह चुके हैं those who are hearing Gita, they are intelligent, कि they ये will हर understand. एक इंद्रिय का अपने So विषय में regarding भाग है। sense objects, he has told पहले earlier की बात that for every sense object we have the rag and है। kama, राग same thing राग only. काम में ते इति काम है। तो वो काम जो है वो विषय में है, इंद्रिय में भी है। So the kama is in the vishaya, the sense object, इसको चस्का लग in जाता the है indriya, कि in the चीजों को sense, खाने का, सुनने का, देखने का। like we become addicted लोगों को to देखने का चस्का लग hearing, जाता है आजकल। seeing, ये एक बहुत बड़ी समस्या है eating. कि Nowadays this is a वीडियो big देखते problem. रहते हैं, People keep watching घंटों लग जाते हैं videos उन चीज़ों में। रात को and 2-3 बजे तक लोग सोते नहीं keep हैं, spending hours and hours in that. They आंखें बेचारी don't even sleep लगी हुई till हैं, even 3 o'clock in the night. शरीर थका हुआ So है, the eyes are continuously मन engaged, कहता है और देख लूँ और body देख is लूँ। tired, but the mind says और watch मन more and more. And then मन mind, का तो खैर अब कहना ही क्या है, सब जानते हैं। so what can be वो said about the केंद्र mind? है, Mind is इंद्रियों the में center प्रकट होती है ना, where इंद्रियों में
desire appears, even if it is in the sense object, it will appear in the mind only. और फिर बुद्धि If it is in the sense, it will appear in the mind only. बढ़ जाती है, And then टेढ़ी रहती है कि the नहीं, buddhi also becomes greedy तो इनको and कहते हैं starts कि telling that इसको yes, it भेष is बना good दो। for you to fulfill this भेष का desire. मतलब So बैठने का, Bhagavan says these ये are इसके the ठिकाने हैं, locations where the इसके enemy मंदिर हैं। is seated and इसको where the अगर enemy आप is hiding. इससे लड़ना चाहते हैं, So if you want to fight इससे आप against this मुक्ति enemy, चाहते हैं, तो if you want इनको freedom संभालिए, from this enemy, then इनको you अपने should नियंत्रण में लीजिए। you should take care of your और senses, बुद्धि mind, द्वारा वो intellect. क्या करती है, एतैर And विमोहयति, what the enemy इनके does द्वारा जो है in वो these मोहित locations करते is करते through these faculties, ये it शरीर deludes हमारे लिए, us. हमारे ज्ञान को ढक दिया। So we are ये Atma and we consider ourselves इसके Sharir, प्रति ज्ञान and हमारे प्रति our मोहित jnana हो gets जाता है। covered. कैसे मोह पैदा होता है कि हमारा जो मूल ज्ञान है कि So मैं how the चेतन हूँ, illusion appears? Our मैं शरीर से भिन्न हूँ, original इसको state is of being an Atma, और फिर मोह not पैदा being होता the है। body, but जब this मोह gets हमें पैदा covered होता है, and तो वैचित्य we become deluded ये है, and we start thinking we are the ऐसा body. समझ लेना, This is what रज्जु को moha सर्प समझ means. लेना, यही तो मोह है ना, यही तो Considering something to be something else, considering a ये rope भ्रम to पैदा be a हो snake. जाता है हमारे अंदर के मैं शरीर So हूँ, we become और deluded उस भ्रम and में ही start जीते thinking रहते that हैं। we are the body. पूरा And then जीवन we इसी भ्रम lead में our बीतता whole है। life in this illusion. और फिर जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए जन्म हमको मिला है, जिसके लिए शरीर मिला है, वो हम भूल जाते हैं, उसके लिए कोई प्रयास ही And नहीं we करते। forget the main purpose of our life and we stop पहले working hard to achieve the goal of our life. That's why this is our इसमें enemy. इन पांच में भी So in these जो मूल अधिष्ठान five है, also, the main वो location वास्तव में है अहंकार, is the ahankar, क्योंकि वहां से चालू होता है because everything begins चित्त from there नामक ये only. जड़ ग्रंथि। What we call the चित, चित माने चित, knot of chit and jada, और जड़, consciousness and matter. जड़ माने ये मन बुद्धि चित्त Chit is अहंकार, ये तो ये दो chetana, एक consciousness, आपस and में jada is matter, and they get संयोग, संयोग tied क्या आपस में together. इनका एक A सन्निकर्ष knot होता is है, made. इसको हम संयोग तो कह नहीं सकते, Actually, you cannot दोनों call it a आपस में sanyog or contact, घुल मिल हो जाता है, आपस में एक दूसरे की मित्रता हो but जाती some है। kind of a knot चित happens. है वो अपने आप They को मन become समझता है, friendly. जड़ जो है वो चित समझता है, दोनों The matter अन्योन्य considers itself as consciousness, consciousness considers संयोग itself as अहंकार है। matter, then there is no difference between both, तो अभी and then we call it हम ahankar. चेतन है ये हम जानते हैं, So we know that we are conscious इसलिए कि हम beings. हैं ये इतना तो जानते We हैं कि मैं know that चेतन we हूँ। exist, we are. कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि मैं Some चेतन people से don't भिन्न even हूँ या know मैं चेतन हूँ, that we are conscious beings, we are different from लोग this ऐसे समझते body. हैं कि मैं शरीर हूँ, Mostly people ये think बॉडी like है, this ये only, जानते नहीं, that we are this body, इसके लिए but at खोजना least they पड़ता है। understand that yes, we are. तो ये जो गांठ है, जो ग्रंथि है, So जो this अंदर knot, हमारा सन्निकर्ष है, यही मूल है, this is the जिसको भगवान main श्रीमद् भागवत में place. आगे ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी हम जो ज्यादा इससे बंधा हुआ है वो ज्यादा हम बोलता है, The more one is, हम one भोगी हैं। has this knot तो ये or अहंकार ahankara, फिर he always speaks in terms of ग्रंथि I. में आता है। तो चित है, एक चित है और एक चित्त है, बस खाली एक तकार So ज्यादा लग गया one है is chit, बीच में। that is चित्त में chetana, अगर एक and पा other दो is तो चित chitta हो जाता by है, adding one more takar, और चित्त that का is मतलब फ्लैट chitta, भी होता है, and chitta means flat also. तो आप फ्लैट हो गए फिर। तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, So then you fall flat वो due to हमारे this maya. शरीर मन बुद्धि इंद्रिय इन्हीं से होती है। So all the actions that we इसलिए perform, it is done by अगर this हमको body, senses, काम mind क्रोध only. से छुड़ाना So है, if we have to release ourselves from this enemy of इसलिए karma, इन क्रियाओं को हमें ठीक करना पड़ेगा। then we will इसलिए have 5वें to अध्याय में भगवान कहते हैं कायेन do the मनसा actions properly. इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, कि आत्मा की शुद्धि के लिए जो है योगी लोग इनसे क्रिया करते हैं, So Bhagavan says that ऐसे the ऐसे yogis, बुद्धि से इस they तरह से
they perform action with this body, mind, senses for self purification, तो आत्म शुद्धि being devoid of attachment. तो वहाँ चार चीजों को लिया है उन्होंने So भगवान ने, there he has taken four things. मन, One is the body, the mind, बुद्धि और इंद्रिय। buddhi, and the indriya, the senses. उसमें सबके पीछे फिर वो अपना अहंकार रहता ही है। And then the ahankar is behind all of this. हमारा इंस्ट्रूमेंट है So this is our और instrument, the इसके ऊपर apparatus, शत्रु ने कब्जा किया हुआ है। and the enemy has captured तो this. जैसे कहा कि इंद्रियाणि हयान्याहु, So as it was said इंद्रिय earlier, that हमारी घोड़े हैं, the senses are like the horses and the body is like the chariot. घोड़ों की Mind is the सारथी, rope और बुद्धि जो है or the reins उसको to control the horses, चलाने and वाली। buddhi is the driver. तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप रथ So पे you बैठे can हैं, consider it like लेकिन you are रथ seated चलाने on the वाला आपका chariot, शत्रु है। but the driver who is वो driving आपके the chariot दिमाग is में your बैठा है enemy. Or let's say you are seated in a सीट car, पर, और जो you कार are को seated in the चलाने back वाला seat, है, जो and कार the को चलाने driver वाला of the आपका car शत्रु है। is your enemy. तो क्या आपका जीवन सुरक्षित है? So is your life नहीं है। safe? You are not safe. या आप हवाई जहाज में जा रहे हैं और जो पायलट You है are in the aeroplane, वो आपका and let's शत्रु है, say the pilot is your सुरक्षित नहीं है। enemy. तो ऐसी Suppose, स्थिति then आपकी your नहीं life है, is not safe. क्योंकि So this भगवान ने is कहा our था कि अपने situation इंद्रिय मन बुद्धि currently, because Bhagavan is telling that your senses, mind, intelligence. इंद्रियों को घोड़े समझो, और मन प्रग्रह में वच, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है। So Bhagavan says that Buddhi is the Sarathi, the driver, तो ये and जो Atma बुद्धि is है, the passenger. पैसेंजर, वो ये आत्मा है। So the Atma is अगर the शत्रु passenger. ने इन सब पर नियंत्रण कर लिया है, So if कब्जा the कर लिया है, enemy तो हम has तो एकदम खतरे में हैं। got hold, has इसलिए captured उसको on all of this, शत्रु के then चंगुल our में लेना life होगा। is under threat. So we have to release तो वो ourselves कभी from संभव this है नहीं, enemy, इसके लिए हम अपना विवेक, अपनी and बुद्धि, that is only possible हमारा जो सबसे बड़ा by using Vivek, our Buddhi, हथियार है, our जो greatest सबसे बड़ा instrument, शस्त्र है, जो हमारी weapon. आत्मा है, The, वो the बुद्धि greatest है। weapon that we have is our Buddhi. और बाकी तो गुरु कृपा, साधु कृपा, The भगवान की rest कृपा, is mercy of Guru, Vaishnavas, उनके ऊपर छोड़ Bhagavan. दें। That is up to वो जो them. कर सकते हैं वो हम But अपनी बुद्धि से whatever कर we सकते can हैं। do, what we can do is use उनके ऊपर our से हम कैसे Buddhi छूटें? to release ourselves from this enemy. इसमें जाना नहीं है, हमें अपने आप ही उसका उपयोग करना है। तो फिर हम इस शत्रु के नियंत्रण से हम मुक्त हो सकते हैं, So then we और can तभी release हम वास्तविक सुख ourselves को प्राप्त from कर the पाएंगे। clutches of the enemy and जब तक actually हमने अपना achieve सारा नियंत्रण happiness, achieve ananda. अपने शत्रु के हाथ As में दे long दिया as है, we have given the control of our life to our enemy, बड़ी till then हास्यास्पद बात it is है, ये कभी संभव ही नहीं है, ये होगा not ही नहीं, possible to become happy. इसमें कोई It will never happen. संशय नहीं है, There is no ये doubt होगा in ही नहीं। this. तो इसलिए भगवान कहते हैं That's इंद्रियाणि why Bhagavan says, प्रकृत्यधिष्ठानम् उच्यते, एतैर् विमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी so को we कोई will stop प्रश्न हो here. तो पूछ If सकते you हैं। have any question, you can ask. बाबा जी, यूट्यूब से प्रश्न है कि किस प्रकार से Question: कुछ लोग जो भक्ति साधना नहीं कर रहे हैं, those who are वो not आस्तिक doing हैं, वे sadhana ज्यादा of bhakti, सहनशीलता और विनम्रता those who दिखाने are में क्यों नहीं लगते atheists, हैं? who are ऐसा expert अनुभव in showing humility, etc. देखा कि वो ज्यादा सहनशील है, How do you say they मुझे are तो ऐसा more अनुभव नहीं है। tolerant? I have no such experience किसी का स्वभाव हो that those सकता who है। are not in sadhana of bhakti, they are तो more ये है tolerant. कि अगर It आपको may be in their swabhava, कि that is मुझे another ऊपर point. जाना है Another point is और if you have some आप desire, भी some भक्ति kamana, करना चाहते हैं,
and you want to fulfill मान लिए जाते that हैं desire, लगता and है you कि know आपको अपनी कामना की पूर्ति केवल अपने आप that अपने just प्रयास by से नहीं होगी, yourself, आपको दूसरे की just by your सहायता की endeavor, जरूरत है। you will not be able to उसको fulfill अपने your शरीर को desire. बदलने में You तकलीफ need होती help है। of the other हम person. इसलिए करते हैं कि Like हमको suppose you are अपने working in an शरीर office, you की know कामना की that पूर्ति कर I will सकते हैं। get wealth from here, and तो then through आपका that wealth I can fulfill my कोई desires. आपका बॉस है And let's say your तो boss, आप उसको your पसंद नहीं employer, करते हैं तो फिर भी if आप you उसको do not सहन please करते हैं। him, तो सहन still करने you के बजाय tolerate him. उन्हीं के कारण कर रहे So हैं। why do you इसका मतलब tolerate ये him? नहीं कि आपको Just for fulfilling your सहन desires. करने का इतना स्वभाव है अंदर से, चाहे It आप is कितना not भी in your अच्छा हो, swabhava to घर tolerate. आके आप उसकी निंदा करें, लेकिन And वो you ऐसा may नहीं go कर home पाएंगे। and then you may criticize इसलिए that वो जो person, but आपको in that particular place in the office you are tolerating, so that is out of compulsion. संदीप जी का प्रश्न है, Next बुद्धि और question. विवेक में क्या What is the अंतर है? difference between buddhi and vivek? बुद्धि का Vivek is a quality of buddhi. विवेक होता है। Discernment, power of discrimination is a quality of आदर्श जी buddhi. का प्रश्न है, Next question. आपने बताया You कि said that we ये should give up the sources of our इच्छा के कारण dukkha, the प्राप्त sources of करना our चाहिए। desires. दूसरी ओर आप ये भी On सिखाते the हैं other कि hand, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए you are योजना teaching us बनानी to make चाहिए। a plan to reach लेकिन our हम आपसे aims ये in जानते life. हैं कि So, जब भी isn't it हमारे लक्ष्य true का that स्रोत है, there are तो क्या desires, हमें the sources of बिल्कुल our उसको नष्ट कर aims? देना So, चाहिए? we should destroy our मैंने ये aims? कहा है कि लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक है Answer. What I have said material is और एक that goal is आध्यात्मिक। of two types. One is तो भौतिक material, लक्ष्य one is आप प्राप्त कर spiritual. लें So, और उसके लिए even आप if प्रयास you करें, achieve the material goal उससे आपको and then you endeavor for that, but ultimately it will not give you आप कीजिए happiness. उसको, लेकिन उसका So परिणाम you आपको can दुख देगा। continue doing that, but its end result will be misery only. अर्जुन का यही कहना था ना कि किम So this is पुरुषोत्तम what तेन वा Arjun was telling, राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, मेरे को अगर स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भी मैं सुखी नहीं होऊंगा। that even if I ये सबकी achieve स्थिति है। the kingdom of Swarga, I will not be happy. So this is everyone's कहने का मतलब ये है कि situation. भौतिक कामनाओं की पूर्ति में आप लगे रहिए, उनको आप So अपना point लक्ष्य is, बनाइए और उसके लिए you अपने make material उत्साह goals, रखिए, you लेकिन उसका keep परिणाम fulfilling them, you become tolerant in सुख fulfilling नहीं them, होगा। but its end result will not सुख be तभी होगा जब sukha. उस कामना की पूर्ति हो जाएगी, नहीं कामना को छोड़ दिया आपने। And even if you get the happiness, it is because that particular वास्तविक object सुख left your mind. आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति से ही होगा। Actual sukh is only by fulfilling the spiritual goals. आपका मूल So, प्रयोजन, मूल लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक your होना चाहिए, main goal should be और उसके लिए spiritual only. जैसे मैंने कहा कि हमारी आवश्यकताएं हैं, And then भोजन की, रहने की, परिवार की, within that, वो पूर्ण whatever करने में ही material हमारा necessities you may have, जीवन है। food, clothing, shelter, इसकी whatever, पूर्ति के लिए you fulfill that. But संसार में that is रहने के also लिए not मुझे your भौतिक वस्तुओं की primary आवश्यकता पड़ेगी। goal. We live in the material world, so we need material इसके objects to लिए sustain ourselves. But that is not the goal of our इसके लिए life. वो उपकरण हैं हमारे Those are आध्यात्मिक simply लक्ष्य के लिए, instruments in our लक्ष्य के लिए। attainment of spiritual goal. फिर वो भौतिक लक्ष्य जो है उनके उपकरण बन जाते हैं। So then when the spiritual goal is the primary goal, these material objects they simply become instruments. संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Dandavat Pranam Babaji Maharaj. Am I audible? Haribol? 80%। हाँ बोलिए, थोड़ा हिलती हुई वाणी है आपकी। अच्छा, बाबा जी महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे So the विवेक question is बुद्धि का, like Vivek हम or लोगों ने discrimination जैसे is a quality of buddhi. और आपने जैसे So क्लास में समझाया कि अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे हमें अपने using स्वरूप को our पाना Viveka, शुरू हो जाएगा। if we start using our Viveka, लेकिन then slowly क्वेश्चंस में we ऐसा will लिखा हुआ start है कि understanding our जैसे Swarupa. 5 बार But it विवेक का is seen इस्तेमाल in करते the हैं, practical लेकिन 10 बार life कामना के that फ्लो में आ जाते हैं। even if we यहाँ use इस our ये Vivek a कैसे few करते हैं times, या ऐसे but then प्रैक्टिस करते हैं? more often we come under the sway of our desires or kamana. इस So what प्रकार should be करने done? के लिए वहाँ भी प्रयोग कीजिए उसका। So answer, you should continue practicing even when you are coming under the sway of your इसमें ज़्यादा desires, सही हो रहा है and तो by your उसका buddhi, if you are already understanding that you are ध्यान failing, उसमें ज़्यादा लगाइए कि then यहाँ you मेरे should दोष use हैं, मैं your इसको ठीक mind and करूँ। your buddhi more into succeeding in those situations also, not falling prey to your desires. उदासीन तो कौनते
वैराग्येण च Bhagavan says भगवान अभ्यास के लिए कहते हैं. that you should continue practicing. हो गया. सृष्टि जी कृपया अपना प्रश्न पूछें. प्रणाम बाबा जी. आपने अभी जैसे बोला So कि question, like you said that या spiritual having spiritual desires or desires related to Bhagavan, they are not enemies, goal in life. तो and that should be our primary goal in life. बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती एक जगह ना योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्ष वैकुंठ लोके पिन पार्षदत्वम, ये सब तो हमें पता है कि ठीक है, अगर कोई प्रेमी है तो वो कुछ मांगेगा नहीं, पर वो उसके बाद एक So अजीब as सा Sri चीज Vishwanath Chakravarti says प्रेम that one who is having prema, he will not ask for anything. नहीं मांग रहे हैं, तो ये आपकी कैसी आवाज रुक स्थिति गई. है? सॉरी. तो ये कैसी स्थिति है जहाँ पे कि हम प्रेम ही नहीं मांग रहे, जो कि बेसिस है हमारे रिलेशनशिप का एक So बीच में how आप is it that we are not desiring for prema also, which is the basis of the relationship? fill in the blanks. आपको मुझसे पता है बेटर कि प्रेमापि न स्यादिति चेतरंतु, कि प्रेम भी नहीं मांग रहे वो. तो ये कैसी स्थिति है जहाँ पे कि हमारा जो फाउंडेशन है So रिलेशनशिप what का, kind of situation is प्रेम this भी हम नहीं that मांग रहे we are not asking for even the foundation of our relationship, the prema कारण itself? क्या रहा फिर उस स्थिति में? Then what is इस the चीज का purpose नाम है of कि human मांग being? नहीं है प्रेम की. आपकी आवाज बीच में कट कट के आ रही है. ओके. पता नहीं हमारा इंटरनेट. I will write it down. I'll just write it down. But I can't write it down. Well, never mind. Maybe God आवाज doesn't want me to ask. आवाज आवाज ठीक से नहीं आ रही है. अभी हाँ, अभी तो आपने एक शब्द बोला है, लेकिन पूरा वाक्य बोलेंगे तो पता चलेगा कि पूरा वाक्य सुनता है नहीं. अच्छा, मैं पूछ रही जो हूँ मेरी समझ में कि आया है थोड़ा बहुत, क्योंकि बीच बीच में आवाज कट रही थी, वो आप पूछना चाह रही हैं कि जो So विश्वनाथ what I could understand is what Sri Vishwanath Chakravarti says, that we should desire only for prem, or people do not desire. that ऐसा is क्यों not what होता है, तो वो इस ठीक है. मेरे आपका प्रश्न ठीक से सुनाई नहीं दिया हमें. ओके. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी जो बोलते हैं कि वो तो सारे प्रकार के मुक्तियों को रिजेक्ट कर रहे हैं और सिद्धि नहीं मांग रहे हैं, बट उसके बाद वो बोल So रहे what हैं कि Vishwanath Chakravarti is saying that not asking for Nisiddhi is mukti, but then he is telling that he is not asking for prema also. Then what kind of situation is this that भगवान के साथ वही चीज ही नहीं मांग, the वास्तविक में हमें foundational relationship, that is ultimately prema, we are not asking that also? दिव्य वस्तु मिल गया जो कि प्रेम है, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, हमें ये सब मिल जाएगा, फिर हम आनंद में रहेंगे. तो ये अनकंडीशनलिटी कैसे आती है रिलेशनशिप में और उसको कैसे कल्टीवेट कर सकता है So how इंसान, do कि we वो get प्रेम ये unconditionality नहीं in the मांगेगा कि हमें relationship, प्रेम से क्या बेनिफिट होगा, बट वो that it प्रेम doesn't से even ask for prema, प्रेम. he just हाँ, तो ऐसा है कि हमारा मन जो है ना, उसमें कामनाएं बैठी हुई हैं. So answer, the issue is ये जो that बात अभी भगवान the बता रहे karma हैं, is seated थोड़ा inside the mind. चिंतन कीजिए. वो कहते What हैं कि Bhagavan is मन जो है ना, explaining here, you should reflect on that properly. कि हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय सबके ऊपर That काम कर our रहे हैं. mind, our buddhi, जितने भी karma हमारे is seated संसार में हैं, ये सब in किसके all that. लोग हैं? ये केवल मेरी और आपकी Bhagavan नहीं, is पूरे speaking सभी about लोग जो all हैं of us in इस this world. संसार में, It's not just ये about you सबकी or यही me. स्थिति है. He's speaking about everyone in this world. तो एक तो ये है कि So मैं इस गीता को पढ़ता one हूँ, point is पढ़ने that का I प्रयास study करता हूँ, Gita and I keep और endeavoring तक जो on हमने my पढ़ा own. है वो And सब whatever we discussed till now, उसकी it मूल बात appears like that. हम भूल जाते हैं, But और एक one बार तो नहीं कह सकते, fundamental भूल point जाते that हैं. we forget, which I और cannot हम tell all कैसे the आगे time, बढ़े, is that how did भगवान this ने Gita इसका begin? प्रारंभ कब किया. When did Bhagavan भगवत begin? गीता शिष्यस्ते हम
Gita. He began when Arjun took shelter of Bhagavan. He became the disciple of Bhagavan. He became a student and he requested to Bhagavan to teach. So I have told so many times that whatever is being taught, this is for us. Bhagavan is doing a Leela by putting Arjun into illusion so that he gets opportunity to teach us through him. If Bhagavan tells us directly you should take a guru, then you may not accept him. So he is speaking indirectly. So if we have buddhi, then we'll understand that I also have to do this. So, but the reality is that only by one's own endeavor, nobody can disentangle himself from this cycle of birth and death in this world. That's why in our Indian culture, Guru is given such a prominent position, role. आचार्यवान वेदा जो आचार्य जिसका है जिसका गुरु है वही जानता है। तो ये मूल बात है जो भगवत गीता में भी आ चुकी है और आगे This भगवान is भी explained कहेंगे in Gita also. Bhagavan will also say. उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये एक बहुत मूल बात है हमारी और हम इसको So this is a very important point and I cannot keep repeating it again and again. So when I understand this much, that on my own endeavor I'm not able to achieve, then we should understand we need help. And I already said that we do have buddhi, we should use that. But along with that, I also said Guru Kripa, Bhagavad Kripa, all these are also needed. That is also essential. Simply by our own endeavor, it is not possible. So, ये आगे भागवत में आता है कि अपने आप होता नहीं है। So this will be explained in Bhagavatam also, that on our own, simply by our own endeavor, we cannot get the knowledge. We have Anadi Avidya, and getting released from that or just by our own endeavor is not possible. For that, you need to take shelter of Guru, Tattvagya, Acharya, whatever you call. So that is the solution. ठीक है, मंगलाचरण। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।